Hello children, welcome to your science class and let's start with class 3 science, the book Periwinkle, a book of science and life by Coral Publishers. So are you all ready? Okay, here we go with chapter number 4 today. Birds. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? Birds के बारे में. अलग अलग तरह के birds we see in our nature. There are many types of birds. So today we'll learn about the birds. First, the learning outcomes. Discuss the features of birds. Describe how birds fly. Describe beaks and claws of birds. किस तरह के beaks होते हैं उनके, किस तरह के claws होते हैं. Discuss nesting habits of birds. And the breaking point, you see many birds around you. They have different sizes, but they all have feathers. Size सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन feathers सबके होते हैं, सभी birds के. They all have 2 wings, 2 legs and a beak. ये सब में common होता है. Different kinds of birds have different kinds of beaks. The beak is adapted to suit the food a bird eats. जिस तरह का food वो bird खाती है, उसी तरह की उसकी beak होती है. Can you name a bird with hooked, sharp beak? Hooked, sharp beak किसका है? So first, let's read the chapter here, then you'll be able to find out which type of beak different birds have. Okay, so let's start the chapter here. Birds. Birds are animals with feathers. They have a beak with no teeth. उनके feathers होते हैं, उनकी beak होती है, लेकिन कोई teeth नहीं होती. They have hollow bones but strong enough. Their forelimbs are modified into wings which help them fly. अब देखिए, ये है एक bird. अब इसके क्या है? feathers होते हैं, beak है, कोई teeth नहीं है. फिर इनके जो bones होते हैं वो hollow होते हैं, लेकिन बहुत strong होते हैं. और जो 4 limbs हैं वो किस में modify हो जाते हैं? वो बन जाते हैं wings. Okay? और यही wings इनको help करते हैं उड़ने में. Birds lay eggs. Birds range in size from the 5 centimeter hummingbird to the 2.7 meter ostrich. Birds like hens, ducks and quails are sources of food. Birds like songbirds and parrots are kept as pets for fun. All birds are active during day, but owls are active during night. सभी birds कब एक्टिव होते हैं? दिन में एक्टिव होते हैं, लेकिन एक आउल ऐसा है जो कि रात को एक्टिव होता है. Now look at the parts of a bird. This is the tail. These are the claws. Now body feathers. Feathers होते हैं body पे. This is the beak. Then the wings, जिससे कि वो fly करते हैं. Flight feathers. Okay? So now children, this was about birds. Birds are social animals. They communicate using signals and through calls and songs. वो कैसे communicate करते हैं? Signals से, call या song, through calls and songs. They take part in social behavior such as cooperative hunting and flocking. How do birds fly? Birds उड़ते कैसे? Most birds can fly. Flight is the primary means of movement for birds. Birds fly for breeding, feeding and escaping from their enemies. Birds क्यों fly करते हैं? Breed करने के लिए, feed करने के लिए, अपने young ones को, अपने young ones के लिए खाना लाने के लिए, और किससे? अपने enemies से बचने के लिए. Birds have a streamlined body, narrow at front and back. Front and back में narrow होता है, इनकी body narrow होती है,
and broad in the middle. बीच में broad होती है, चौड़ी होती है इनकी body. They have hollow bones which makes the birds light. Birds have strong muscles attached to wings. इनके wings के साथ जो muscles attached होती हैं वो बहुत strong होती हैं. The muscles move the wings up and down. और उन्हीं muscles के द्वारा जो wings होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं. When a bird wants to fly, the muscles help the bird flap, move up and down or side to side its wings. जब इनको fly करना होता है तो यही muscles इनको help करती हैं इनके wings को flap करने में. The tails help the bird change direction during flight. और tail क्या करती है? Birds की जो tail होती है उससे ही ये अपने direction को बदल सकते हैं. All these features help birds fly easily. When a bird flaps its wings up and down, the air under the wings pushes the bird up and the bird goes up into the air. अब जब bird flap करती है अपने wing को, फड़फड़ाती है जब ये अपने wings को ऊपर नीचे, तो जो air होती है wings के नीचे की जो air होती है वो wings को वो push करती है bird को ऊपर की तरफ और वो bird move up कर जाती है air. Once it has reached high enough, it does not need to flap its wings anymore. और जब ये बहुत ऊंचा उड़ जाते हैं तो ऊपर जाकर इनको अपने विंग्स को फ्लैप करने की जरूरत नहीं होती है. Now see some birds flying. This is eagle, pigeon, duck. Science in context. Birds like vultures, eagles and pigeons fly at great height for hours. बहुत ऊपर तक, बहुत ऊंचा ये बर्ड्स जो हैं vultures, eagles और pigeons, ये बहुत घंटों तक, बहुत ऊपर तक उड़ सकते हैं, बहुत ऊंचाई. Birds like hens and peacocks fly very low only for a few minutes. और peacock और hens जैसे birds जो हैं वो बहुत नीचे उड़ती हैं और बहुत कम टाइम के लिए, few minutes के लिए. Birds like hawks and swallows can fly for hours but at a lower height. और ये जो हॉक्स और स्वॉलोज हैं ये भी घंटों तक उड़ सकते हैं लेकिन थोड़ा कम हाइट पे. Ostriches, penguins and kiwis cannot fly. ये तीनों flightless birds हैं. They are called flightless birds. A hummingbird can flap its wings 90 times in just 1 second. जो hummingbird होती है, छोटी सी bird होती है, वो अपने wings को 1 सेकंड के अंदर 90 times फ्लैप कर सकती. Now comes the feathers. अब हम feathers के बारे में पढ़ेंगे. Feathers are a feature unique to birds. They help a bird fly. ये feathers इन birds को fly करने में help करते हैं. Feathers are also used in display and signal. There are 3 types of feathers. अब feathers कौन कौन से types के होते हैं? Down feathers, body feathers and flight feathers. Each of them serves its own purpose. इन तीनों का जो purpose होता है अलग अलग होता है, अपना अपना purpose होता है इन तीनों का. The down feathers are small and fluffy. They cover a bird's body, thus keeping the bird warm. अब ये जो down feather होते हैं इनकी body पे, ये छोटे होते हैं और fluffy होते हैं. देखिए ये है down feather, okay? छोटे हैं और fluffy हैं. और ये क्या काम करते हैं? इनकी बॉडी को कवर करने का काम करते हैं और इन्हें गर्म रखते हैं इनकी बॉडी को. The flight feathers are long feathers on wings and tails. Wings और tails पे ये flight feathers होते हैं, लंबे feathers होते हैं. They help the bird fly. नाम से ही पता चल रहा है flight feathers. So these are the flight feathers. Okay? The remaining body is covered with body feathers. जो बाकी की बॉडी है वो बॉडी फेदर से कवर्ड होती है. दे गिव द बर्ड्स बॉडी अ शेप. और ये जो बॉडी फेदर है ये एक बर्ड की बॉडी को शेप देते हैं. द अरेंजमेंट एंड अपीयरेंस ऑफ फेदर्स ऑन अ बर्ड्स बॉडी इज कॉल्ड plumage. Okay? The plumage is regularly molted
Old feathers are replaced by the new feathers once or twice a year. अब इनके जो पुराने feathers होते हैं वो नए feathers से replace हो जाते हैं. कब? कितनी बार? एक साल में once या twice a year. एक दो बार चेंज हो जाते हैं. ओके? और ये जो टेल फेदर है, देखिए, टेल फेदर मतलब जो टेल में फेदर्स होते हैं, इनके पूंछ में जो फेदर्स होते हैं. फाइन. नाउ द बीक्स ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की चोंच. अ बर्ड्स बीक ऑल्सो कॉल्ड बिल. बर्ड की बीक क्या कहलाती है? इसे बिल भी कहते हैं. इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ इट्स स्कल. स्कल का ही एक पार्ट होता है बीक. द मेन पर्पस ऑफ द बीक इज टू ईट फूड in the easiest and most effective way possible. बीक से खाना खाते हैं. Sifting, sucking, cracking, crushing, spearing, tearing, picking and probing are just a few of the things that birds can do with their beaks. अपनी beak से ये सब काम करते हैं. Although some birds use their beak to defend their territories, gather nesting materials or to weave a nest. और कुछ बर्ड्स अपने टेरिटरीज को डिफेंड करने के लिए बीक का यूज करते हैं या नेस्टिंग गैदर करते हैं, उससे नेस्टिंग मटेरियल गैदर करते हैं या नेस्ट को वीव करने का भी काम करते हैं बीक से. ओके? नाउ चिल्ड्रन, टाइप्स ऑफ बीक्स. अब हम जो अलग अलग तरह के बीक्स होते हैं अलग अलग बर्ड्स में, उसके बारे में पढ़ेंगे. ईगल्स, हॉक्स, vultures and owls have strong, sharp and hooked beaks designed for tearing prey apart. अब ये जो देखिए, vulture का बीक है, ये ईगल का बीक है. इनके strong, sharp और hooked होते हैं. देखिए कैसे hooked हैं ये beaks. इनसे क्या करते हैं? ये prey को tear करते हैं. A duck's bill, on the other hand, is flattened and broad with tooth-like edges for straining food out of water. अभी जो डक का जो बिल है, जो बीक होता है, वो कैसा होता है? फ्लैट होता है. देखिए फ्लैट है, ब्रॉड विथ टूथ लाइक एजेस होते हैं. इसके एजेस पे टूथ होते हैं छोटे छोटे, फॉर स्ट्रेनिंग फूड आउट ऑफ वाटर, क्योंकि ये पानी में से अपना फूड निकालते हैं. हमिंग बर्ड्स एंड सनबर्ड्स suck nectar from flowers. They are attracted to red tube-shaped flowers. ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? रेड और ट्यूब शेप्ड फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. They need a beak that can fit into those flowers. अब उस फ्लावर में जो बीक फिट होता है वैसी बीक होती है इनकी. So their beaks are long and slender. इसलिए इनकी बीक लंबी होती है. Which work like a straw to suck nectar out of flower. Okay, children? Now see, अब देखिए हमिंग बर्ड्स बीक कितनी लंबी है. बर्ड छोटी होती है बट बीक बहुत लंबी होती है. सन बर्ड्स बीक, इट्स ऑल्सो लॉन्ग. बर्ड्स लाइक pigeons, peacocks and weaver birds eat grains. Grain eating birds have a short pointed beak. It allows the birds to break seeds open as easily as a nut cracker. जैसे नट क्रैकर से सीड ओपन किया जाता है, वैसे ही इन बर्ड्स की बीक से भी ये ऐसे ही इसको ओपन करते हैं सीड्स को. बर्ड्स लाइक पैरट्स हैव हुक्ड बीक्स टू क्रैक ओपन नट्स एंड हार्ड सीड्स. द हुक्ड बीक ऑफ पैरट्स ऑल्सो हेल्प देम क्लाइंब अप अ ट्री और वॉल. नाउ सी हियर, this is a pigeon and this is the pigeon's beak. And this is a parrot's beak. A heron has a long pointed beak to catch a fish and insect. ये water में से fish को पकड़ती है, insects को पकड़ती है, तो इसके long pointed beak होते हैं. A woodpecker drills holes into a tree and uses its long tongue to get the insects out. Because woodpecker is always hitting its head against a tree, it requires a strong pointed beak that is designed to take a beating. वुड पे हमेशा हिट करता रहता है, तो इसकी जो
beak होती है वो strong pointed beak होती है. This is heron's beak and this is woodpecker's beak. A pelican has a skinny bag that is attached to its beak. A hoopoe has a pincer beak for pulling out insects from their hiding places. ये hoopoe की beak है. ये क्या करता है, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं छुपे हुए उनको ढूंढ के निकालते हैं इस बीक से. और पेलिकन की स्किनी बैग होती है इसकी बीक से अटैच्ड. फाइन. नाउ कम्स द फीट एंड क्लॉज. Claws are sharp, usually slender and curved nails on the toe of a bird. Bird की toe में curved nails की तरह ये claws होते हैं. Slender and curved nails. A bird has 2 feet and 4 toes. Birds के 2 feet होते हैं और 4 toes होते हैं. Different birds have different shapes and sizes of their feet and claws. A bird uses its claws to. अब ये अपने क्लॉज को किस में यूज करती है, क्या करने के लिए यूज करते हैं? कैच इट्स प्रे एंड होल्ड इट व्हाइल फ्लाइंग. अपने प्रे को कैच करते हैं और उसको जितनी दूर तक ये फ्लाई करते हैं उसको पकड़ के रखते हैं उतने टाइम तक. प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम इट्स एनिमीज एंड मूव अबाउट. फाइन. Birds like sparrows, crows, cuckoos and doves are preaching birds. ये सभी preaching birds होते हैं. They have flexible toes with 1 pointing backwards and 3 in the front. अब ये toes जो होते हैं flexible toes, इसमें एक तो point करता है backward, एक पीछे की तरफ point करता है और बाकी 3 जो होते हैं वो front की तरफ होते हैं. For grasping perches. Birds like woodpeckers and parrots are climbing birds. अब woodpeckers और parrots जो हैं वो climb करते हैं tree पे. Climbing birds हैं ये. They have 2 toes pointing forwards and 2 backwards for climbing up, down and sideways on tree trunks. क्योंकि इनको climb करने की जरूरत होती है तो इनके 2 जो toes होते हैं सामने point करते हैं और 2 पीछे की तरफ. These feet help the birds to pick up fruits with 1 foot and cling to the trees with the other foot. Water birds like ducks and geese have web between their toes. अब जो water birds होती हैं जैसे duck या geese, इनके toes के बीच में web जाल बना होता है for swimming. Gulls also have feet similar to these, so they do not sink while walking in the soft sand or mud near the edge of water. Okay? Now wading birds. क्या हैं ये wading birds? Like herons and cranes have long toes. इनके लंबे toes होते हैं which spreads the bird's weight over a large surface area. This facilitates walking on soft surfaces near the edge of water. वाटर के एज पे सॉफ्ट सर्फेसेस होते हैं, वहां पे इनके ये टोज हेल्प करते हैं इनको चलने में. फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक हॉक्स, ईगल्स एंड आउल्स यूज लार्ज क्लॉज टू कैप्चर, किल एंड कैरी प्रे विद देयर फीट. फाइन. अ डव perching on a plant पे बैठे हैं और पैरट्स फीट एंड क्लॉज, ये है पैरट के फीट और क्लॉज. फाइन. नाउ लॉन्ग टोज ऑफ अ हेरॉन and eagle's feet and claws. ये है देखिए webbed toes of duck. duck के toes के बीच में ऐसे web बने हुए होते हैं जो इन्हें swimming में help करते हैं. Pigeons and chickens use their strong feet to scratch the dirt and leaf litter to uncover seeds and insects. Strong-legged flightless birds like the ostriches protect themselves by kicking with their powerful feet and sharp claws. देखिए ostrich का feet and claws इनका powerful होता है. They have a powerful feet and sharp claws. This is rooster's feet and claws. Okay children, now some fill in the blanks to do. Fill in the blanks to complete the following statements.
A bird has a dash body. कैसी body होती है birds की? Bird has a feathered body. It has a feathered body. Fine. A bird's bones are dash and dash. A bird's bones are hollow and strong. Fine. Down feathers are soft and small. Soft होते हैं और छोटे होते हैं. The beak of a hummingbird is dash and dash, is slender and long. Fine. Now state whether true or false. A wading bird has long toes. Yes, this is true. So write down T here. The beak of an eagle is short and strong. Yes, this is also true. The sparrow is a perching bird. Yes, sparrow is a perching bird. It's true. The woodpecker taps the bark of a tree to search for insects. Yes, true. Okay. Now, let's move further. So now children, let's read about the nests. Birds के घोंसलों के बारे में पढ़ेंगे. A home built by a bird to lay eggs is called a nest. जो घर एक bird बनाती है अंडे देने के लिए, eggs lay करने के लिए, उसे कहा जाता है nest. Different birds choose different places to build their nests. Some birds build their nests in trees, tall grasses or bushes. Some birds build their nests in walls, old buildings and on street lights. अलग-अलग जगह पे अलग-अलग birds अपने nest बनाते हैं. Some birds use grass, twigs, dry leaves, pieces of cloth, wool and paper to make their nests. They carry these materials in their beaks or toes. और ये सारा मटेरियल अपने beaks या toes में कैरी करते हैं. Birds like penguins, pigeons and doves make simple nests. ये बहुत simple nest बनाते हैं pigeons, penguins और doves. A simple nest is built of either sticks or pebbles. Herons and eagles also make simple nests. They build their nests on trees. See, herons nest on a tree and penguins nest on land. Birds like hummingbirds and crows build a cup-shaped nest. Hummingbirds और crows जो होते हैं वो cup-shaped nest बनाते हैं. It conveys more protection to the eggs and young birds. It is normally built in a tree. और ये normally कहाँ बनते हैं? ये nest कहाँ बनाते हैं? Trees. A weaver bird builds a hanging nest. देखिए ये है weaver bird का nest. Such a beautiful nest it is. It hangs from the tip of a branch with a single entrance hole at the lower end. A weaver bird builds many nests but uses only one to confuse the snakes which eat the eggs. Look how smart this weaver bird is. वो बहुत सारे ऐसे नेस्ट बनाती है किसको कंफ्यूज करने के लिए? स्नेक को, जिससे कि उसके जो एग्स हैं वो स्नेक से बचे रहें. ओके. A tailor bird stitches leaves together to make a nest. अब देखिए ये टेलर बर्ड का नेस्ट है. बहुत सारे जो लीव्स होते हैं उसको एक साथ स्टिच करती है अपना नेस्ट बनाने के लिए. दिस इज टेलर बर्ड्स नेस्ट एंड दिस इज हमिंग बर्ड्स नेस्ट. फाइन. नाउ birds like kingfishers make their nests on the ground. House martins or swallows make their nests on cliffs and walls with mud. This is house martin's nest and this is parrot's nest. Birds like parrots and owls use holes in tree trunks. A woodpecker makes a hole in a tree trunk and uses it as its nest. देखिए पैरट्स और आउल्स जो हैं वो भी ट्री के ट्रंक में जो होल्स होते हैं वहां पे अपना नेस्ट बनाते हैं.
Now, science and context. A cuckoo does not make its nest because it lays its eggs in a crow's nest. कुक्कू जो है कभी अपना नेस्ट नहीं बनाती, वो अपने एग्स कहाँ ले करती है? क्रो के नेस्ट में. The female crow looks after the baby cuckoos because they are more or less similar. उनके जो बेबीज होते हैं, तो जो फीमेल क्रो होती है वो इन बेबी कुकूज की देखभाल करती है. नाउ पेरेंटल केयर इन बर्ड्स में भी पेरेंटल केयर करते हैं. किस तरह से? सम बर्ड्स ले 2 eggs, others more than 2 eggs. Both male and female birds sits on the eggs one by one to keep them warm. कुछ बर्ड्स 2 eggs ले करते हैं, कुछ 2 से ज्यादा करते हैं, और मेल और फीमेल दोनों एक के बाद एक उस एग पे बैठते हैं उसको वार्म रखने के लिए. दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन. चिक्स कम आउट ऑफ एग्स who are blind and naked. अब जब चिक्स निकलते हैं इसमें से तो वो ब्लाइंड होते हैं, उनको दिखाई नहीं देते, उनकी आईज क्लोज्ड होती हैं. This is called hatching. The length and nature of parental care varies widely amongst different species. अलग अलग species का parental care का जो टाइम है वो अलग अलग होता है और नेचर भी अलग अलग होता है. In some species, parental care ends at hatching. The newly hatched chick digs itself out of the nest mound without parental assistance and can fend for itself immediately. अब कुछ स्पीशीज ऐसे भी होते हैं जो जिनमें कि जैसे ही एग से हैच होते हैं चिक्स, दे लीव देम ऑन देयर ओन. अपने आप ही वो डिफेंड करना सीख लेते हैं अपने आप को. इन सम स्पीशीज द पीरियड्स ऑफ पेरेंटल केयर टेक्स अप टू 6 months. और कुछ स्पीशीज में ये पेरेंटल केयर जो है वो 6 months तक चलता है. 6 months तक पेरेंट्स देखभाल करते हैं. अ बर्ड फीडिंग हर चिक्स. ओके, नाउ कम्स द माइग्रेशन. क्या होता है ये माइग्रेशन? माइग्रेशन रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ बर्ड्स इन ग्रुप्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. माइग्रेशन का मतलब होता है बर्ड्स का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह में ग्रुप्स में. Many birds which find unfavorable conditions during winter at their home place fly to a place having favorable conditions for laying eggs and raising chicks. अब कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जिनको कि विंटर्स में कंडीशंस फेवरेबल नहीं लगते हैं जहां वो रहते हैं, तो वो क्या करते हैं? एग्स ले करने के लिए किसी दूसरी जगह पे मूव कर जाते हैं. They have to fly thousands of kilometers to find a favorable place. एक अच्छी फेवरेबल जगह ढूंढने के लिए उनको thousands of kilometers फ्लाई करना पड़ता है. Some of them are killed during this journey. इस जर्नी में कुछ बर्ड्स मर भी जाते हैं. Siberian cranes are migratory birds. ये Siberian cranes जो हैं ये माइग्रेटरी बर्ड्स कहलाते हैं. दे फ्लाई फ्रॉम साइबेरिया इन रशिया टू इंडिया ड्यूरिंग विंटर्स. विंटर्स के टाइम पे ये साइबेरियन क्रेन्स रशिया से इंडिया माइग्रेट करते हैं. दे स्टे हियर टिल द कंडीशंस इन साइबेरिया आर फेवरेबल. जब तक साइबेरिया में कंडीशंस ठीक नहीं हो जाते, फेवरेबल नहीं हो जाते हैं, वो इंडिया में ही रहते हैं. देन दे फ्लाई बैक टू साइबेरिया और उसके बाद वो फिर से साइबेरिया वापस चले जाते हैं. So they are known as Siberian cranes. So children, let's wrap up fast. Birds are animals with feathers. They lay eggs. Feathers are of 3 types: down feather, body feathers, and flight feathers. Birds have a streamlined body and hollow bones that help them in flying. Birds have a beak to eat food. The beak also helps the birds to protect themselves from their enemies. Birds build their nests when they are ready to lay eggs. They use different materials to build their nests. Most birds look after their young ones. They feed their young ones and teach them how to fly. ज़्यादातर birds अपने यंग वंस की देखभाल करते हैं, उनको फीड करते हैं और उनको उड़ना सिखाते हैं.
The period of parental care is different for different birds. Some birds travel thousands of kilometers to find favorable conditions. This journey is called migration. इस जर्नी को माइग्रेशन कहा जाता है और वो बर्ड्स क्या कहलाती हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स. नाउ चिल्ड्रन, चेक योर प्रोग्रेस. Tick the correct option. Which of the following birds have large claws? किसके बड़े claws होते हैं? Doves, ducks, eagles. So tick eagles. Which of the following birds build their nests in tree trunks? Miners, owls, peacocks. Owls. Which of the following is a climbing bird? We just now read parrot, owl, eagle. Parrot is a climbing bird. Which of the following is a wading bird? Heron, vulture, woodpecker. Heron is a wading bird. Which of the following has a strong, sharp and hooked beak? Sunbird, kingfisher, eagle. Eagle has a strong, sharp and hooked beak. Which of the following birds have free, flexible toes? Owls, crows, woodpeckers. Owls have free, flexible toes. Which of the following birds has webbed toes? Hen, heron, duck. Duck has webbed toes. Which of the following cannot fly? Owl, penguins, miners. Penguins cannot fly. Now children, fill in the blanks. Fill in the blanks with the appropriate words given in the brackets. Eagles build their nests on trees, grounds. They build their nests on trees. Dash built many nests to confuse snakes. Owls, weaver birds. Weaver birds. So write down here, weaver birds. Dash built their nests on the ground. Penguins, herons. Penguins. Penguins build their nests on the ground. Sitting on eggs to keep them warm is called hatching, incubation. It's known as incubation. Incubation. Fine. The long feathers of wings are dash feathers. Flight or down. They are the flight feathers. The arrangement of feathers on the body is called fledging or plumage. It's known as plumage. Dash build their nest with mud. Martins, woodpecker. Martins build their nest with mud. Dash have web between their toes. Owls, gulls. Gulls have web between their toes. Now children, let's do some matching here. Match the following. Bird, nest. On one side, the names of the birds are given. On the other side, their nest is given. तो हमें birds को उनके nest से match करना है. Hummingbird. Hummingbird, cup-shaped nest. Fine. Woodpecker. Woodpecker, hole in the wood. Kingfisher. Kingfisher, hole in the ground. And weaver bird makes a hanging nest. Now state whether true or false. Birds have solid bones. No, they have hollow bones. So this is false. Wings of a bird are attached with weak muscles. No, this is also false. The muscles are very strong. Peacocks and hens fly at great height. No, this is false. Feathers are unique features to the birds. Yes, children, this is true. The unique feature of the birds is their feathers. Down feathers keep the birds warm. Yes, this is also true. Okay?
The beak of a hummingbird is long and slender. Yes, this is true. Sparrows have a hooked beak. No, false. Perching birds have flexible toes. Yes, true. Parrots have 2 toes pointing forwards and 2 backwards. Yes, this is true. Pigeons make hanging nests. No, this is false. So write down F here. Fine, children? Understood clearly? So thanks for watching the video, and I hope this chapter was very interesting for you all. बड़ा मजा आया इसे पढ़ के. आपने अलग अलग तरह के बीक्स के बारे में आपको पता चले, बर्ड्स के अलग अलग तरह के टोज, क्लॉज के बारे में आपने पढ़ा. So just go through the chapter once again. फिर से पढ़िएगा इसको, and you will have developed more interest and you will come to know more. Okay? So let's meet with a new chapter once again. Stay blessed till then and keep learning, keep growing. Bye.